Hello everyone. Welcome back to my channel Mamta Keshri 11, a platform for topic-wise monthly current affair in both Hindi and English medium. Today I have covered up Science and Technology current affair for the month January to April 2026. So complete last 4 months Science and Technology current affair in the form of top 85 MCQ. So you could have a quick revision to this video. Before we go ahead, I'm requesting everyone to please subscribe my channel so that you will get the notification for my next video and you won't be able to miss any more video. So let's go ahead now. The first question is for the month of April 2026. किस कंपनी ने लगभग 3.9% की सब्सिट्यूटी दर WER के साथ मैथ ट्रांसक्राइब 1 नामक AI ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश किया? Which company introduced the AI transcription model MAI transcribe 1 with a word error rate WER of around 3.9%? The option C is correct, that is Microsoft. किसने 14 अप्रैल 2026 को अमरावती में भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण सुविधा का शुभारंभ किया? Who launched India's first indigenous quantum computing testing facility in Amaravati on 14th April 2026? Option B, N. Chandrababu Naidu. 1972 के बाद चंद्रमा की ओर पहली मानव युक्त यात्रा किस अंतरिक्ष मिशन ने की? Which space mission marked the first crewed journey towards the moon since 1972? Option C, that is Artemis 2nd. भारत ने गगनयान कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements is correct regarding India's Gaganyaan program? Option B is correct, that is the second batch of astronauts may include civilian STEM experts. किस मुख्यमंत्री ने उस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया जिसने महाराष्ट्र कृत्रिम कक्ष परियोजना को मंजूरी दी? Which chief minister led the cabinet that approved the Maharashtra Artificial Intelligence Policy 2026? Here are the options, and the correct answer is option B, that is Devendra Fadnavis. विश्व मलेरिया दिवस 2026 के अवसर पर किस संगठन ने 5 किलोग्राम से कम वजन वाले शिशुओं के लिए विशेष रूप से तैयार की गई पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी? On the occasion of World Malaria Day 2026, which organization approved the first ever malaria drug specifically designed for infants under 5 kg? Option B, that is World Health Organization WHO. आंध्र प्रदेश ने 14 अप्रैल 2026 को किस परियोजना के तहत भारत का अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया? Andhra Pradesh launched India's first quantum computer under which project on 14th April 2026? Here are the options, and the correct answer is option C, that is Amaravati Quantum Valley Project. Skyroot Aerospace का विक्रम फर्स्ट रॉकेट जो हाल ही में खबरों में रहा है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि Skyroot Aerospace Vikram 1 rocket recently news is significant because it had option, and the correct answer is option B. It is India's first privately built orbital rocket. यह भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित कक्षीय रॉकेट है. नासा द्वारा हाल ही में निर्मित नैन्सी ग्रेस रोमन आंतरिक दूरबीन को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस आंतरिक दूरबीन का उत्तराधिकारी माना जाता है? The Nancy Grace Roman Space Telescope, recently assembled by NASA, is probably considered the successor to which of the following space telescopes?
Here you are with the option, and the correct answer is option B, Hubble Space Telescope and James Webb Space Telescope. किस संस्थान ने अध्ययन किया जिसमें भारत को जामुन सीजियम का उद्गम स्थल और प्रारंभिक विविधीकरण केंद्र बताया गया? Which institution conducted the study identifying India as the origin and early diversification center of Jamun cesium? These are the options, and the correct answer is option B, that is Birbal Sahini Institute of Paleosciences. बिरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान। किस कंपनी ने 20 अप्रैल 2026 को पहली बार न्यू ग्लेन रॉकेट के पुनः उपयोग किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई? Which company successfully landed the reuse booster of the New Glenn rocket for the first time on 20 April 2026? Option B, Blue Origin. किस संस्थान ने AI सक्षम भूवैज्ञानिक और खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की है? Which institute has established the Vikram Sodhi Center for Excellence for AI-enabled geological and mining systems? These are the options, and the correct answer is option C, that is IIT Kharagpur, Indian Institute of Technology, Kharagpur. ऑस्ट्रेलिया में रात्रि तोते की पुनः खोज में किस कारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? Which factor played a key role in the rediscovery of the night parrot in Australia? So these are the options, and the correct answer is option B, that is use of modern technology combined with indigenous knowledge. आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वदेशी ज्ञान के साथ किया जाता है। 14 अप्रैल 2026 को अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी AQRF का शुभारंभ किसने किया? Who launched the Amaravati Quantum Reference Facility AQRF on 14th April 2026? So the option B is correct, that is N. Chandrababu Naidu. किसने AI संचालित प्लेटफॉर्म सारल AI के विकास की घोषणा की जिसका उद्देश्य शोध प्रकाशनों को सोशल मीडिया सामग्री में सरल बनाना है? Who announced the development of AI-powered platform Saral AI to simplify research publication into social media content? The option B is correct, that is Jitendra Singh. किस संगठन ने मंगल ग्रह पर आवास के लिए एशिया का पहला 3D प्रिंटेड विकिरण कवच विकसित किया है? Which organization has developed Asia's first 3D printed radiation shield for Mars habitats? So these are the options, and the correct answer is option C, that is Arca Space Studio. नासा द्वारा आर्टेमिस सेकेंड मिशन के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाता था जो 11 अप्रैल 2026 को सुरक्षित रूप से समुद्र में उतरा था? Which spacecraft was used by NASA for the Artemis second mission that safely splashed down on April 11, 2026? Here the option, and the correct answer is option C, Orion. गगनयान मिशन के लिए दूसरा एकीकृत वायु निक्षेप परीक्षण IADT-02 10 अप्रैल 2026 को किस स्थान पर आयोजित किया गया था? The second integrated airdrop test IADT-02 for the Gaganyaan mission was conducted on April 10, 2026 at which location? So these are the options, and the correct answer is option B, that is Satish Dhawan Space Center. किस देश ने विश्व का पहला वाणिज्यिक
upper 6 gigahertz internet launch किया है? Which country has launched the world first commercial upper 6 gigahertz internet? The option C is correct. That is UAE, United Arab Emirates. बाह्य अंतरिक्ष संधि जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की नींव है पर किस वर्ष साइन किए गए थे? The Outer Space Treaty, which forms the foundation of international space law, was signed in which year? Option C, that is 1967. भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के अंतर्गत मिशन मित्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? What is the primary objective of mission Mitra under Indian Space Research Organization Gaganyaan mission? So here we are the option, and option C is correct. That is to assess human endurance, teamwork, and psychological strength. मानव सहन शक्ति, टीम वर्क और मनोवैज्ञानिक शक्ति का आकलन करने के लिए। भारत के राष्ट्रीय गहरे समुद्री जीव जंतुओं के भंडार के रूप में नामित भावसागर रेफरेंस सेंटर को किस संगठन ने विकसित किया? Which organization developed the Bhavsagar Reference Center, designated as India National Repository for Deep Sea Fauna? These are the options, and the correct answer is option C, that is Center for Marine Living Resources and Ecology. समुद्री जीवी संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र CMLRE. Now we will move to Science and Technology for the month of March 2026. एलन मस्क की हाल ही में घोषित टेराफैब परियोजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? Elon Musk's newly announced TerraFab project is mainly related to which sector? Option B, that is semiconductor chip manufacturing. Semiconductor chip निर्माण, this is the correct answer. Option B. किस कंपनी ने उद्यम AI और एवं अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए बैंगलोर में अपना पहला अवसंरचना नवाचार केंद्र शुरू किया? Which company has launched its first infrastructure innovation center in Bengaluru to boost enterprise AI and infrastructure development? So these are the options. The correct answer is option C, that is IBM. तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया है? Tamil first dark sky park has been established at which location? Option B, that is Ariyur Shola Forest, Cooley Hills. Ariyur Shola 1, Cooley Hills. किस कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित सहायक पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया है जिसे कार्यों को स्वचालित करने और फाइलों को प्रबंधित करने के डिजाइन से किया गया है? Which company has launched the AI-powered assistant called Personal Computer designed to automate tasks and manage files? So the option C is correct. That is Perplexity. कोविड के BA 3.2 वेरिएंट को आमतौर पर सिकाडा वेरिएंट क्यों कहा जाता है? Why is BA.3.2 COVID variant popularly called the Cicada variant? Why is this so? The option B is correct. That is, it's remained hidden for a long time and reappeared suddenly. ये लंबे समय तक छिपा रहा और अचानक फिर से प्रकट हो गया. Next question is, scalable marketing content production के लिए कौन सी तकनीक पेश करने के लिए Adobe ने NVIDIA के साथ साझेदारी की? Adobe partnered with NVIDIA to introduce which technology for scalable marketing content production?
adoption, and the correct answer is option B, that is 3D digital technology. हाल ही में इसरो ने एलपीएससी को डिलीवर किया गया आकाश 300 3D प्रिंटर किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? The Akasha 300D printer recently delivered to ISRO's LPSC is developed by which startup? So these are the options, and the correct answer is option C, that is Space Time 4D. मार्च 2026 में साहिवाल स्वदेशी नस्ल के मच्छरों का सफलतापूर्वक उत्पादन करने के लिए आईसीएआर आईवीआरआई द्वारा किस उन्नत प्रजनन तकनीक का उपयोग किया गया था? Which advanced reproductive technology was used by ICAR IVRI to successfully produce Sahiwal indigenous breed calves in March 2026? These are the option, and the correct answer is option B, that is OPO IVFET. GPT 5.4 नैनो किस प्रकार के कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त है? GPT 5.4 Nano is best suited for which type of tasks? These are the option, and the correct answer is option B, that is classification, data extraction and ranking. विज्ञान संचार और एसटीआई नीति अनुसंधान को मजबूत करने के लिए आंध्र प्रदेश साइंस सिटी ने 30 मार्च 2026 को किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन किए? Andhra Pradesh Science City signed an MOU with which organization on 13 March 2026 to strengthen science communication and STI policy research. So the option C is correct, that is CSIR NISCPR. Artemis second mission मुख्य रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये Artemis second mission is mainly important because it will send humans around the moon after more than 50 years. 50 से अधिक वर्षों के बाद मनुष्यों को चंद्रमा के चारों ओर भेजना। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने MXene आधारित एक ऐसी सामग्री विकसित की है जो कौन से दो कार्य कर सकती है? IIT Guwahati researchers developed a MXene-based material that perform which two functions? So these are the options. The correct answer is option B, that is hydrogen fuel production and seawater desalination. हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन और समुद्री जल विलवनीकरण। गुजरात का पहला साउंडिंग रॉकेट जिसे 15 मार्च 2026 को धोलेरा के पास लॉन्च किया गया था, किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया था? Gujarat first sounding rocket launched near Dholera on 15 March 2026 was developed by this startup. So these are the option, and the correct answer is option C, that is Om Space Rocket and Exploration Private Limited. ओस्बेकिया जुम्बिन रियाना नामक एक नव खोजी गई पादप प्रजाति असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई गई? A newly discovered plant species, Osbekia jumbinga was found in which national park of Assam? So the correct option is option C, that is Manas National Park. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में प्रक्षेपण यान मार्क 3 LBM-3 की पेलोड क्षमता बढ़ाने के लिए किस क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तट पर सफल परीक्षण किया? The Indian Space Research Organization ISRO recently conducted a successful sea-level hot test of which cryogenic engine to enhance the payload capacity of the launch vehicle Mark 3 LBM-3. So these are the options. The correct answer is option B, that is
C-20 इंजन। निष्क्रिय उपग्रह वैन एलन प्रोब ए जिसके मार्च 2026 में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने की उम्मीद है का मुख्य रूप से अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता था। The defunct satellite Van Allen probe A, expected to re-enter Earth's atmosphere in March 2026, was primarily used to study. These are the options. The correct answer is option B, that is space radiation belts around Earth. पृथ्वी की चारों ओर अंतरिक्ष विकिरण बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वम एआई द्वारा मार्च 2026 में शुरू किया गया सर्वम स्टार्टअप प्रोग्राम निम्नलिखित में से कौन से लाभ प्रदान करके स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने में लक्ष्य रखता है? द सर्वम स्टार्टअप प्रोग्राम launched in March 2026 by Servom AI aims to support startups with providing which of the following benefits? So these are the options, and the correct answer is option B, that is API credits, advanced AI tools, and engineering support. API credit, उन्नत AI उपकरण और engineering सहायता. Now we will move to the Science and Defense Technology current affair for the February month, February 2026. भारत और ग्रीस ने फरवरी 2026 में किस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त आश्रय घोषणा पत्र पर साइन किए? India and Greece signed a joint declaration of intent in February 2026 to strengthen cooperation in this sector. These are the options. The correct answer is option C, that is defense industry. भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई वायुसेना के बीच 2026 में आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास किस रणनीतिक स्थान के निकट आयोजित किया गया था? The joint air exercise between the Indian Air Force and Royal Thai Air Force in 2026 was conducted near which strategic location? These are the options. The correct answer is option C, that is Strait of Malacca. Malacca, Bengaluru, Madhya. So next, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी? The Defense Acquisition Council approved procurement of 114 Rafale fighter jets from which country? So these are the options. The correct answer is option C, that is France. अग्निवस्त्र ने भारतीय सेना के साथ निम्नलिखित में से किसकी आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं? Agnivastra has signed an MOU with the Indian Army for supplying which of the following? The option B, that is advanced carbon fabrics and composite materials. उन्नत कार्बन कपड़े और मिश्रित सामग्री। भारतीय नौसेना ने हाल ही में संयुक्त समुद्री बलों CMF के अंतर्गत किस टास्क फोर्स की कमान संभाली है? Which task force has Indian Navy recently assumed command of under the Combined Maritime Forces? CMF. These are the options, and the correct answer is option D, that is CTF 154. पहला अंतर्राष्ट्रीय साहसिक प्रतियोगिता का IMACC 2026 भारत के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा? The first International Military Adventure Challenge Cup IMACC 2026 will be held in which region of India? These are the options, and the correct answer is option C, that is Eastern Himalaya, पूर्वी हिमालय। हाल ही में खबरों में रहे हैमर वायु से सतह हथियार का निर्माण भारत में किस देश के साथ रक्षा समझौते के तहत किया जाएगा? The Hammer air-to-surface weapon recently news will be manufactured in India under defense agreement with which country? These are the options. The option C is correct, that is France. फरवरी 2026 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
BL में मिसाइल एकीकरण सुविधा का उद्घाटन किसने किया? Who inaugurated the Missile Integration Facility at Bharat Electronics Limited, BEL, in February 2026? These are the options, and the correct answer is option B, that is Rajnath Singh. एक्सरसाइज मिलान 2026 के दौरान उद्घाटन किए गए मिलान विलेज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? What is the primary purpose of Milan Village inaugurated during exercise Milan 2026? These are the options. The correct answer is option C, that is to promote cultural exchange and cooperation among navies. नौसेनाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देना। राजनाथ सिंह द्वारा अभ्यास मिलान 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? Where was exercise Milan 2026 inaugurated by Rajnath Singh? These are the options, and the correct answer is option C, that is Visakhapatnam. वृक्ष प्रहार अभ्यास 2026 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? Where is the 16th edition of exercise वृक्ष प्रहार 2026 being conducted? These are the options, and the correct answer is option B, that is Bucklow, Himachal Pradesh. फरवरी 2026 में चालू किया गया INS अंशदीप किस परियोजना से संबंधित है? INS अंशदीप commission in February 2026 belongs to which project? These are the options, and the correct answer is option B, that is ASW Shallow Watercraft, ASW SWC. पोखरण में परीक्षण की गई स्टेलर 10 विश्वराडस प्रणाली मुख्य रूप से किस प्रकार के खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई है? The Strela 10 Vishoradus system tested at Pokhran is primarily designed to counter which type of threats? These are the options, and the correct answer is option C, that is low altitude aerial threats. निम्न ऊंचाई वाले हवाई खतरे। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2026 के 7वें संस्करण में जापान का प्रतिनिधित्व किस यूनिट ने किया? Which unit represented Japan in the 7th edition of exercise Dharma Garshin 2026? These are the options. The correct answer is option B, that is 32nd Infantry Regiment. 32वां इन्फेंट्री रेजिमेंट। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वर्ष प्रहार का 16 संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? Where is the 16th edition of India-UAE Joint Special Forces Exercise Varsh Prahar being conducted? So the option B is correct, that is Bucklow, Himachal Pradesh. भारतीय वायुसेना ने किस कमान द्वारा संयुक्त समुद्री अभ्यास कलारी लीप का संचालन किया गया था? The Joint Maritime Exercise Kalari Leap was conducted by which command of the Indian Air Force? These are the options, and the correct answer is option C, that is Southern Air Command. दक्षिणी वायु कमान। फरवरी 2026 में हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई भारत रणभूमि दर्शन यात्रा किस स्थान से शुरू हुई थी? The Bharat Ranbhumi Darshan expedition flagged off in February 2026 started from which location? These are the options, and the correct answer is option C, that is Dwarka. वर्ष 2026 में चालू होने वाला INS अंशदीप मुख्य रूप से किस भूमिका के लिए डिजाइन किया गया है? INS अंशदीप commission in 2026 is primarily designed for which role? Here are the options, and the correct answer is option B, anti-submarine warfare in shallow water. उथले पानी में पनडुब्बी रोधी युद्ध।
भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई विश्व राडस मिसाइल प्रणाली का सबसे सटीक वर्णन क्या है? Vishu Radis missile system recently tested by India is best described as option C, man-portable short-range air defense system, Manav portable Laghu Shreni Vayu Raksha Pranali. Now we will move to January 2026. ONGC द्वारा शुरू की गई प्रज्ञा AIX का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? What is the primary objective of Pragya AIX launched by ONGC? Is that option? The correct answer is option B, to integrate multiple AI tools into a centralized digital ecosystem. कई AI उपकरणों को एक केंद्रीकृत डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र में एकीकृत करना। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के जनरेटिव AI जेन AI स्टार्टअप्स में से लगभग 39% किस राज्य में स्थित है? According to the Economic Survey 25-26, which state holds nearly 39% of India's generative AI startups? These are the options. The correct answer is option C, that is Karnataka. Google DeepMind द्वारा हाल ही में विकसित अल्फा जीनोम का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? Alpha genome recently developed by Google DeepMind is primarily used for. These are the options. The correct answer is option B, that is analyzing long stretches of human DNA. मानव DNA के लंबे खंडों का विश्लेषण करना। हाल ही में खोजी गई मशरूम प्रजाति हेमलेसिनम इंडिकम किस भारतीय राज्य में पाई गई थी? Recently discovered mushroom species Hemelicynum indica was found in which Indian state? Is that the option? The correct answer is option C, that is Uttarakhand. किस भारतीय राज्य ने Bacillus subtilis को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? Which Indian state has declared Bacillus subtilis as a state macro? Is that the option? And the correct answer is option C, that is Kerala. हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिमालय में 492 संभावित हिम नदी झील निर्माण स्थलों की पहचान करने वाला एक पूर्वानुमान ढांचा विकसित किया है? Recently, researchers from which institution developed a predictive framework identifying 492 potential glacial lake formation sites in the eastern Himalayas. These are the options. The correct answer is option B, that is IIT गुवाहाटी। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में एनवीडिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कौन सी अगली पीढ़ी की AI चिप लॉन्च की है? Microsoft recently launched its next generation AI chip to compete with NVIDIA. Here are the option, and the correct answer is option B, that is Maya 200. सड़क निर्माण में स्टील स्लैब प्रौद्योगिकी को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण से बढ़ावा दिया जाता है? Steel slab technology in road construction is primarily promoted for which of the following reasons? These are the options. The correct answer is option C, to enhance road durability and promote sustainable waste reuse. सड़क की मजबूती बढ़ाने और कचरे के टिकाऊ पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नासा ने ISS से पहली बार चिकित्सा निकासी किस तिथि को पूरी की? On which date did NASA complete the first ever medical evacuation from ISS? These are the options. The correct answer is option C, that is 15 January 2026. Current fries मवेशी नस्ल मुख्य रूप से किस लिए जानी जाती है? The current fries cattle breed is probably known for. These are the options. The correct answer is option B, that is high milk yield with adaptability to Indian climate.
उच्च दूध उत्पादन क्षमता और भारतीय जलवायु के अनुकूल होने की क्षमता। सुनीता विलियम्स हाल ही में खबरों में क्यों थी? Why was Sunita Williams recently in the news? These are the options. And the correct answer is option C. She retired after 27 years of service at NASA. Option C is correct. उन्होंने नासा में 27 वर्षों की सेवा के बाद सेवा निवृत्ति ली। आर्टेमिस सेकंड मिशन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये Artemis second mission is significant because these are the options. And the correct answer is option B, because it will send astronauts around the moon after more than 50 years. 50 से अधिक वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर भेजा जाएगा। गूगल द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया ट्रांसलेट जिम्मा किस AI आर्किटेक्चर पर आधारित है? ट्रांसलेट जिम्मा recently launched by Google is based on which AI architecture? These are the options, and the correct answer is option C, that is Gemma 3. हाल ही में खोजा गया विशालकाय काला मूंगा जिसकी आयु 300 से 400 वर्ष अनुमानित है किस क्षेत्र के निकट पाया गया था? Recently discovered giant black coral estimated to be 300 to 400 years old was found near which region? These are the options, and the correct answer is option B, that is Fiordland. Fiordland. मुकेश अंबानी ने जियो के जन केंद्रित AI प्लेटफॉर्म की घोषणा कहाँ की? Where did Mukesh Ambani announce Jio's people first AI platform? These are the options, and the correct answer is option C, that is Vibrant Gujarat Regional Conference Rajkot. हाल ही में खबरों में छाई स्क्वाड क्या है? Squad recently seen in the news is, these are the options, and the correct answer is option C, that is India's first legged mobile manipulator. भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर। PSLV C 62 EOSN1 मिशन में विसंगति रॉकेट के किस चरण के दौरान हुई? The anomaly in the PSLV C62/EOSN1 mission occurred during which stage of the rocket? The option C is correct, that is third stage PS3. परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा किस संस्थान में शुरू की गई थी? परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी was launched at which institution? So these are the options, and the correct answer is option C, that is IIT Madras. So that's all for today, everyone. Thanks for watching. Requesting everyone to please subscribe my channel so that you will get the notification from my next video. Click the like button, share to your friend. Please write down your comment, your feedback in the comment box. Thank you all. Bye. See you in the next video.